Hello बच्चों, let's do the question number 5. Rationalize the denominator. Here the question is given that 1 upon root 7, and you know that root 7 is a irrational number, and when we are dividing this rational number 1 by irrational number, then this is a irrational number. What we have to rationalize, we have to make this denominator rational number. And how can we do this? Rational number means we have to change this 7 into 7, and if 7 can be written as root 7 into root 7. That means if we multiply this by 7 root 7, then this will become 7. But what can we do? What to do this? We have to multiply and divide both by this, so that this get cancels and you left with 1. Okay, that means, and why we are doing this? Just to make this denominator rational, because this is a irrational. Okay, now multiplying and dividing by root 7. So multiply 1 upon root 7 upon root 7 into root 7. Okay, which will be further equal to 1 into root 7 will remain root 7 upon root 7 into 7, you'll get 7. Okay, so in this way you have changed this denominator, irrational denominator, into rational denominator, and we stop here because we got the result what we have been asked. Now let us move toward 1 upon root 7 minus root 6. Okay, now we have to remove this square root so that they can become what? Rational. This denominator can become rational number. And we have already done in question number 2 how to simplify this type of equation by using identity. Okay, or simply you have to make this square. Is there any option? Yes, there is an option. If we multiply this by what? Root 7 plus root 6. So multiplying and dividing both, multiplying and dividing by what? Root 7 plus root 6. Okay, plus root 6. Why we are doing so? So that it can be changed into identity a minus b into a plus b, which can be written as a square minus b square. So the square, this square root will cancel out with that square root. Okay, so do this. So root 7 plus root 6. You have to remember that the sign should be opposite. Okay, because we have to change this into an identity first. So because we have only one option to make them square. Now 1 into this, you'll get what? Root 7 plus root 6 upon, now which identity? By using, if you are finding any problem in solving this, then go through the question number 2 thoroughly. Okay, by using a minus b into a plus b, which is further equal to a square minus b square. So here a is root 7 and b is root 6. So a square minus b square will be root 7 square minus root 6 square. Okay, and further this will be root 7 plus root 6 upon root 7. This square will cancel with square, you're left with 7 minus root 6 square means this will get with this and you'll remain with 6. So root 7 plus root 6 upon 1. Okay, so we have rationalized this denominator. So this is the answer. Okay, now let us move towards the third part.
Third part is 1 upon root 5 plus root 2, and here it is plus, that means to make this minus, what we will do, multiplying and dividing by root 5. Here it is plus, opposite sign, minus root 2, so that it can be changed into identity, and further this square root get cancels out. So 1 upon root 5 plus root 2 multiply by root 5 minus root 2 upon root 5 minus root 2. Okay, again here, which is further equal to 1 into whole this term, it will remain as it is, root 5 minus root 2 upon. So why using again in denominator, why using what, a plus b into a minus b, which is further equal to a square minus b square. So a is root 5 here, so I will write root 5 square minus root 2 square, okay, which will be further equal to root 5 minus root 2 upon 5 minus 2, okay, and which is further equal to what, root 5 minus root 2 upon 3. Now let us move toward the question number 4, fourth part. 1 upon root 7 minus 2. Okay, here it is root 7 minus 2. This is a rational number, but this is irrational number. Okay, again apply the same method, multiplying. This is called the rationalizing the denominator. Multiplying and dividing by root 7. What, here it is negative sign, so we will use the positive, root 7 plus 2. So root 7 plus 2 multiply by 1 will remain as it is, and in the denominator you will get root 7 minus 2 and root 7 plus 2. So why using identity? Here again a minus b, a plus b, by using what, a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. So here a is what, root 7, and b is 2. So write down. The numerator will remain same because we have already multiplied this by 1. So root 7 square, here there is no square root, okay, minus b, b is 2, not root 2. So 2 square, which is further equal to root 7 plus 2 upon root 7 square, this square cancels with square and you're left with 7 minus 2 2s are 4, and which is equal to root 7 plus root 2 upon 7 minus 4, 3. So we have rationalized this denominator and this is the answer. मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. देखिए अब इसमें क्या बोला हुआ है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है. यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक इरेशनल नंबर है. अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ए स्क्वायर रूट यहाँ से हम रिमूव कर सकें. हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अगर रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है. तो इसलिए अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में तो कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर में भी वही ऑपरेशन फॉलो करेंगे जो हमने डिनोमिनेटर में करा है.
तो हम डिनोमिनेटर को अगर √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है, 1/√7 इंटू 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, √7/√7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 को क्या लिख रहे हैं, √7 इंटू √7। इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि 1 इंटू √7 तो वैसे है, लेकिन √7 इंटू √7 7 हो रहा है। यही हमें बोला है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 1/√7 माइनस √6 है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2 में भी आइडेंटिटी यूज़ करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं चाहिए दोनों जगह। तो इसके लिए हम याद करेंगे कि क्या किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय द सेम नंबर्स विद अपोजिट साइड्स, मतलब यहाँ पे उनके साइड जो है अपोजिट होते हैं। न्यूमरेटर में भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर भी। यहाँ हमने 1 को √7 और √7 लिखा था, और यहाँ पे हम 1 को √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 लिख रहे हैं। क्यों? कि जिससे कि ये इस तरह की आइडेंटिटी बन जाए। और यहाँ पे हमारा जो मेन एम है दैट इज़ टू रिमूव दिस स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर ऐसा करने से √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एंड स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, और आपके पास ये हो जाएगा। ये क्यों कैंसिल होता है मैंने आपको बताया, रूट का मीनिंग होता है, इसका मतलब है 1/2। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हुए हैं।